Thank you and good evening to all. Myself is Mrs. Sukhvinder Walia, as Sir said. And thank you, Sir, and thank you, the organizing team, to give me this opportunity for delivering this lecture on artificial intelligence. So my lecture is very simple and it is applicable in all the domains. Whatever the teachers are here, they can easily get the knowledge of the simple artificial intelligence. So I am presenting my screen first. Yeah, is it visible to you all? The screen? Yeah. So my topic is very simple. It is application of artificial intelligence. I'm starting with the outline of this topic. My lecture will be starting with the introduction of AI and the AI technologies. AI in its various domains: AI in the healthcare, education, finance, transportation, business, safety, security, environment, ethics, and future trends. But because of the limitation of the time and all, maybe I'm just going with the main important highlights of the AI in the different domains. So first of all, I'm just giving you a simple definition that what is an AI. The AI is a term which is used to describe how technology, especially the computer system, may duplicate the human intelligent processes. Now the thing is that if we are just take this name AI. AI is nothing but it is the intelligence, human intelligence, which will be duplicate with the themes of the different processes and the machines, and using the computer codes and everything, that is the programs and the hardware and the software, and making a new concept of a particular problem. Normally, these processes include the three main important aspects. Number one is learning, number two is reasoning, and number third is self-correction. That means a system which will be have called the AI system will able to learn or gain the knowledge from the past. It will be easily make the rules and take the decisions with the help of the reasons. And third, it can easily self-correct it. Self-corrected means if there is some problem in the code or something, and where the system have to take the decisions, so on the basis of the conditions, system can easily take the decisions and will be go with the new phase of the program. So these are the three main process which can make the simple machine is an AI machine. That the name refers, it is the artificial intelligence, it is not the human intelligence, it is the artificial. Human can create the intelligence in the systems, in the machines, to make the new processes and to make the new programs and the codes. So the goal is nothing but, the goal is what is it to create machines that are capable of doing activities like speech recognition, visual perception, language translation, and decision making things. So now the AI is technology. Actually, this is the main important part of the the AI umbrella. AI umbrella will be consist of three main aspects. Number one is machine learning. Number two is deep learning. Number three is natural language processing. Because right now in the new era or in this trends, only the three main important parts where the machines are developed and market is work in all this. Like we can, if we can say that a word analytics, so analytics can only comes with the three main parts. These are the main parts. Number one is machine learning. Actually all the algorithms which are there in the AI can come under the part of the machine learning programs. The machine learning programs are able to create algorithms, and these algorithms will be mainly in the four main parts. That is, it may be a supervised learning, it may be unsupervised learning, it may be a semi-supervised learning, it may be a reinforcement learning. I am in a simple language, just give you the one example. Supervised learning, the machine, if it takes everything from the past, then that is called the supervised learning. If the machine learns everything from the past experiences, then it is supervised learning. If it can be predict the future
on the basis of some new trends and technologies or some new patterns, then that is called unsupervised learning. If it will be lies in both supervised and unsupervised in between that, then that is called a semi supervised learning. And if it can be create the new phenomena or the new machine with the help of the with all these 3 learnings, then that is called the reinforcement learning. In this, the deep learning is the part where it will becomes under the reinforcement learning. And what is the deep learning? It is the second part of the AI, where AI can create the machines, the high and complex machines. Like when we are just say something, the speech recognition, like the speech passwords, and there is a video from which we can recognize the speeches, and we can have the different systems where your tongue twisting, and then your speech and your voices will be get and recognized, and the frequency of your voice can be easily recognized, and the systems can work. That is called the speech recognition, where the system can take the command according to your frequency of the speech. That is what the speech recognition system. Again, we can have under the deep learning only, we can have natural language processing. In the next slides, I can give you the example of the natural language processing. Natural language processing is actually what it is, the computers which can generate the human language data. Like we can have a Google translator. A very best example is a Google translator. When we are putting something is in English, it is in any, if it is in English, it can be easily translated in any language. Then that is can be done only by the language translation, and the program or the code which runs behind this is called the natural language processing, which can easily interpret the data. It also used for the sentimental analysis. As we all know, in the Facebook and all, when we are just giving the likes, when we are just giving some emojis, then that emojis and that likes will be called as a code, and that code can easily be translated into the form of the simple binary numbers, and that binary numbers will be give us the sentimental analysis. So these are the same things. We can have chatbots and all, voice assistants. We can have Shri and all in the iPhone and all. That is what all the voice assistants that all come under the natural language processing programs. Again, in the AI and its technologies only, we can have computer vision, robotics, and expert system also. Now, what is a computer vision? We all know that everything can be easily be explained with the help of graphs. We have a visual world where we can have the digital images or the videos through. We can easily can give information to the person. And these applications can also be used for the facial recognition, image segmentation, medical image analysis. These all will become under the computer vision part of the AI. And AI can also deal with the robotics. Inside the robotics is the field where AI can work with the mechanical engineering and electronics to create the intelligent machines which can be perform some physical tasks. Like we can have industrial robot, we can have human interaction robots, that are also called the social robots. So robotics is the part of the AI where AI can work with the engineering subjects. Then we can have the expert system. Expert system are the most sophisticated systems of the AI platforms, in which the systems is able to take the decision on the basis of the on the basis of some recommendations, on the basis of some rules, some reasoning, and that all are come under the expert system. The expert system are such a big systems which can take their decisions, and these systems are the big servers which can be work with the different types of codes and different types of rules. And coming to the domain of the AI, so applications of the AI will be there in the various fields. As you see in this diagram, it will become under the data security, finance, astronomy, healthcare, transport, agriculture, education, e-commerce, automotive, social media, and many more things. First of all, I'm just focusing your focus on this, that is AI in the healthcare. Inside the healthcare, there are the various. These are the main important domains where the AI can mostly use. Like first of all, medical imaging. We can visualize
the 3D models and 2D models with the different types of images, and that images can easily be recognized with the help of different AI tools. Disease diagnosis and the prediction, where with the help of different parameters of a particular disease, we can just make the data set, and that data set easily predict the disease. Like we can have the systems in which if for example the parameter one is the cough, parameter two is the for example some they are the different two or three parameters, and cough, cold, like this we can have a parameter, so the system can easily diagnose and give the result that what disease the this patient should will we have, or should will we get if these parameters will be included with these numbers. So these are called the disease diagnosis system. Same as that, we can have personalized treatment plans. Every AI system now, we will have such type of AI systems where the person can easily get their own personalized treatment plans, like for example health plans and all, where they will have their own the data, where I can put my own data and I can get the different type of the different advices that I should be take this type of this type of thing for that treatment, or like this. Remote patient monitoring might, like for example the doctor will be there in some place, and from there it can be easily for us to get the information, and this systems can easily monitor our own. For example, we will have a chip in our own this thing, for examples. So these chip systems can easily recognize the patient problems, and then diagnosis it and give the treatment at the same time. Virtual health assistants and the chatbots, like we can have the different chatbots and the robots. This virtual health assistants are also used. These are the small programs with the IoT chips, which can be give the informations about whether our health is okay or not. Or clinical decision support system are specifically used with the doctors and the nurses to take the best decision for a particular upon the particular parameters of the disease for a particular patients. So these are the various AI in the healthcare. Now coming to the AI in the education, as you all know, education right now, the education sector is very much influenced by the artificial intelligence systems. Like we can have adaptive learning system. Adaptive learning is the best, where the intelligent tutoring system is also there. Predictive analytics is there. Predictive analytics means, for example, I want to analyze the evaluation, or I want to analyze the result of a student, but that I want to predict that is a result on the basis of some last parameters, past parameters, like for example what is the attendance of that student, what is the conditions of his or her home, what are the different parameters. If the student is not learning properly, if the student is not getting the information properly, if the students are not able to learn the things and understand the things, so they are the different parameters which can help the teachers to get that all the things, and give the special attention to the students, and that will become under the intelligent tutoring system. And with the help of these systems, the student can easily we can easily predict the future of the academic future of the particular student, so that we can treat him or her with the special teaching, special classes and special remedial classes, so that the student get good grades and the good results. And we can also have the different types of the different type of software which can use, and they us in for the asynchronous learning, in which we can get the all the recorded lectures and everything, and on the basis of our own feasibility, the student can easily get that lectures and get all the information about the particular topic as per their needs. So and as we know that AI in business is really very important, and it can only work with the different pattern analysis. Actually, under the AI,
we can have one algorithm that is called association rule algorithm. That association rule algorithm is actually work with the marketing patterns, like how much the customer can easily, what is the customer behavior, and how the customer can easily work with the market, and how the industry should be take, or the industry should be take, or that patterns through which the customer can easily get the information. And it can also work for the fraud detection. Fraud detection means what, where if there is something, some happens during the transaction, online transactional problems is there, then we can easily detect there is a fraud detection with the help, through which we can easily find out in the form of the customer behavior. If there is the problem in the behavior of the customer for giving payment or for giving something, then it is easily can be detected by the AI systems. So, and we come in the for the AI in the data security and defense. As we all know, it is very important part of right now, because everything will be there in the social media. So normally the data in the social media can easily be accessed by anybody if it is not secured, and if it is not being prevented by the different hackers and all. So there is an AI autonomous systems which can easily update themselves. Like we can have the data, the systems where we can lock our IDs, we can hide our information, and we cannot want to make all the friends and in the social media. That can easily be done by the by these, already these websites are using this, but behind these all websites we can have the systems which can be intelligently work for the whole team. Then we can have cyber defense and network security, and the most important is target recognition and the tracking. The target recognition and the tracking is the system where the defense can be work and give the different types of codes, and with that code the easily, like drones and all, can easily find out the easily find out the target with the help of algorithms. And that algorithms are little bit complex in the form, but it can be used right now. And now coming to the most important part, and the that is what the last part of my presentation, that is what the ethical hacking. Ethical AI is what, where the everything, that if we are doing this ethical AI, the ethical AI is what, where the if we are building that system should be responsible system. That should be that system will be, the algorithm should be designed in such a way so that the models and systems, it will be transparent, and it can be only developed for the social needs. There should be a monitoring and controlling on that systems, and there the data should be very much safe. For that, as we have the personalized data, it should be very much saved, and so that we can save our privacy also, and so that we should be very good in the different types of the levels where the artificial intelligence can. Because as we know that if the technology will be have their advantages, it also have their disadvantages. As the trends are going on and on, as much of the use of AI will be at the same time. If AI will be give us so many advantages, at the same time it is also give the disadvantages. So to take the disadvantages, we have to be go with the advantages, and that advantages can only be done with the ethically AI. And ethically AI will be says that if we are rights, give the all the privacies and all if we are just designing an algorithm, it should be very much go with the needs of the social, not with the this thing that it will be destruct somebody, it will be give a bad implication to anything. That is should not be there. And coming to the future, in the future, the right now the main focuses will be there for the human interaction system. Now we will have such a systems where the human can interact with we can have humanoid robots, where it will be something like each and everything can be work with the person to person. Like we can have some interaction with two humans, we will have the interaction like with the
robots also. We will have many deep learning models right now, which will be work as a transformers. Transformers are nothing but they are the code which can be work for both the deep learning and the machine learning models. And right now we are just having our work on the drones, which will be robotic drones. Robotic drones means what? When right now we will have only the drone which can be work, which are not taking the decisions, but now the AI is working to make a robotic drones. And then we have a autonomous AI expert system, like we can have chat GPT and all. This is the autonomous AI expert systems which can be work, and which can be give the information about both the things, whatever we want from the day, from the past, whatever we want to create in the future. These will all the things can be easily in the form of the expert system, and the best example is chat GPT. GPT is for that. And autonomous decision support systems. All the business and all the industries right now work for their own decision support systems, where the predictions can easily be taken care by the AI models. So this is what about the AI systems, and this is all my this thing. So coming to the screen, if you have any doubt and all, I can give you the answers for that. That's all from my side. हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, बताएं। हाँ मैडम, मेरे पहला एक सवाल है। अभी रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी है गवर्नर ने कि सभी बैंकों को सावधान रहना चाहिए एआई से। तो ऐसा क्या खतरा है हमें? एक तो ये है। दूसरा सवाल मेरा है, जो ऑटोनोमस कॉलेज है और कंपनी के साथ मिलके, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कोई संस्था के कुछ गलत सिलेबस यानी गलत कुछ प्रोडक्ट की तैयारी भी कर सकते हैं? जैसे अगर हम यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के अधीन कॉलेज रहता है तो सिलेबस हमारा वहाँ से आता है बन के, वहाँ एक एक्सपर्ट टीम रहती है और सभी कॉलेज में वो लागू होता है। लेकिन ऑटोनोमस में ऐसा है कि कॉलेज को पूरी प्राथमिकता, मतलब उसको पूरी मतलब वो अपने ऊपर जिम्मेदार रहते हैं, अपने खुद के ऊपर रहता है। और वो किसी कंपनी से, प्राइवेट कंपनी से मिलके क्या एआई जैसे यानी कोई खतरनाक चीज का कुछ अंदेशा बन सकता है? सर देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर एक पार्ट में एडवांटेज जैसे एडवांटेज होता है, उसी तरीके से अभी जितने भी एआई के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसके लिए, उसके साथ साथ एथिकल एआई के लिए बहुत ज्यादा ही रिसर्च किया जा रहा है। जैसे अगर आप कोई भी मशीन बनती है तो उसका उस चीज का सोसाइटी पे और सोसाइटी की आने वाली चीजों पे क्या इफेक्ट होता है, वो सबसे पहले आप देखा जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि अगर हम लोग ऑटोनॉमस कॉलेज हैं और हमने अपना बनाया है सिलेबस, और तो आपको सबसे पहले अपने एआई सिस्टम पे उसका प्रेडिक्शन करके आप देख सकते हैं कि उस सिलेबस से रिलेटेड कितनी जॉब्स निकल सकती हैं और उस जॉब से रिलेटेड कितना प्लेसमेंट क्रिएट हो सकता है, कि स्टूडेंट उस चीज को अगर लेता है तो उसको आगे क्या चीज मिल सकती है। सो दिस टाइप ऑफ द थिंग्स क्या करता है जो एआई होता है सर, वो तो सिर्फ एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ ये बता सकता है कि ऐसा हो सकता है। वो भी किस पर बता सकता है? अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पे। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ बारिश होने वाली है, तो उस बारिश को होने के लिए हमें उसी जगह के पुराने पूरे रिकॉर्ड उठाने पड़ेंगे कि इस समय, इस दिन वो बारिश उस समय हुई थी क्या या होने वाली थी क्या। वो उसके पास्ट रिकॉर्ड होते हैं, और पास्ट रिकॉर्ड से सर पता चलता है। एआई सिस्टम अपने आप से तो कुछ कर नहीं सकता, तो वो जो कुछ भी करता है वो सर पास्ट रिकॉर्ड से ही करता है। बाकी सब चीजें जो होती है वो कंट्रोल होती हैं ह्यूमन के हाथ में। अगर ह्यूमन उसने अपना सिस्टम बनाया, जैसा भी बनाया, जैसे मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया, आपकी मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग वो पूरी आपके हाथ में। आप अगर सिस्टम को डिसीजन बोल भी रहे लेने के लिए, तो वो उन्हीं सिस्टम्स पे लेगा ना जो पैरामीटर्स आप देंगे। आप पैरामीटर्स ही वैसे दीजिए ना जिससे कि सिस्टम पूरे आपके कंट्रोल में रहे। मतलब मेरा ये सोचना है। थैंक यू। मैडम, दूसरा ये भी है कि अगर मान ले ऑटोनोमस में हो और देखिए अगर आज भ्रष्टाचार में लिप्त है तो सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं, मेरा खुद का अनुभव है। और एक चीज और भी बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, सरकारी में नहीं है। सरकारी में तो 10% है, मेरा खुद का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो जैसा ऑटोनोमस कॉलेज है, मेरा कॉलेज है और आपकी कंपनी है, हम दोनों मिलके कुछ बड़ा अंदर कुछ बना तो नहीं लेंगे और
बाकी उसका प्रभाव फिर वो ये हॉलीवुड की फिल्में दिखा देते हैं जैसे, क्या सच में वो नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं जैसे मैंने बताया कि वो कुछ नहीं है, वो एक सिर्फ कंप्यूटर का प्रोग्राम है, दैट्स ऑल। और वो कंप्यूटर का प्रोग्राम और मॉडल तभी काम करता है जब हम उसे डेटा प्रोवाइड करते हैं। जैसा आप उसे डेटा प्रोवाइड करेंगे, आप जैसा उसकी कोडिंग करेंगे, वो उतना ही काम करेगा, उससे ज्यादा। ये सब चीजें बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं। आप इतना पावरफुल मशीन तब बनाने लगेंगे, जैसे आप रोबोट बोलेंगे तो आप अपने हाथ से जब कंट्रोल छोड़ेंगे तब वो मिलेगा ना, ऐसा कंट्रोल तो छूटता ही नहीं है सर। हम लोग खुद इतने मॉडल्स बनाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो हम लोग जब मशीन मतलब अपन जब प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में ये सब सिखाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा, उसके सामने आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने उसको सिखाया है कि लाल कलर का जो फल होता है, जो फल होता है उसे हम सेब कहते हैं। तो एआई मशीन का बस इतना समझना है कि अगर उसके सामने मैं लाल कलर का अनार लाके रखूं तो वो फिर मुझे उसको लाल कलर का सेब ही बोले, तब वो मशीन मेरी एक अच्छी इंटेलिजेंट मशीन है। अगर वो उसको पहचाने ही ना तो वो मेरी इंटेलिजेंट मशीन नहीं है। तो लाल कलर के सेब के लिए मैंने उस मशीन को क्या क्या दिया था, मैंने उसको कलर बताया, मैंने उसको टेस्ट बताया, मैंने उसको उसका स्ट्रक्चर बताया। तो स्ट्रक्चर में उसने देख लिया दोनों गोल हैं, शेप दोनों का गोल है। कलर में देख लिया दोनों लाल हैं। लेकिन जब वो पैरामीटर जब उसको टेस्ट में जाएगा तो उसको समझ में आएगा ना, यहाँ दाना यहाँ दाना होता है और यहाँ दाना नहीं होता है, तब मशीन दे पाएगी ना। तो ये 3 पैरामीटर्स तो मैंने खुद ने दिए थे ना मशीन को, वो तो ह्यूमन ने खुद ने दिया था। मैडम इन्होंने फिर हेलो, खतरा है जो सभी बैंकों को चेतावनी। हाँ मैडम, जो रिजर्व बैंक गवर्नर ने अभी घोषणा की है, सभी बैंकों को चेताया है, तो ये कौन सा खतरा हो सकता है? सर देखिए, जहां तक मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये गवर्नमेंट वगैरह में जो खतरे आप जैसी बात कर रहे हैं, ऐसी तो खतरे से वो आपका साइबर अटैक्स हो सकते हैं और कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर मशीन अपने खुद के पास है और अपने खुद के ही अंडर अपने पैरामीटर्स में है तो फिर मशीन कुछ भी नहीं करेगी, वो तो मेरे इंटरनल मामले में है। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे बात कर रहे हैं तो वो साइबर अटैक्स ही होते हैं कि भाई आज हमने आपका पूरा डेटा अटैक कर लिया, आज हमने आपका पूरा डेटा ले लिया। वो सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें हैं। बाकी ऐसा कुछ कोई मशीन अपने ऊपर ऐसे कोई वो नहीं, बिल्कुल ऐसे कंट्रोल नहीं कर लेती है ह्यूमन पे, क्योंकि ह्यूमन का इंटेलिजेंस तो खुद का मतलब बनाया हुआ, नेचर का दिया हुआ है। वो तो मशीन है जिसे हम बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा कंट्रोल ज्यादा है सर, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद मैडम, वही था एआई से धन्यवाद। एक बात मैं बोलना चाहती हूँ सर। जी जो मैम अगर आप अलाउ करें तो जी एक चीज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने कल ही एक वीडियो देखा और उस वीडियो में ये था कि एआई के द्वारा एक लड़की का फोटो भी बनाया, उसको मॉर्फ किया वीडियो को, उसकी आवाज निकाली और उसकी मम्मी को फोन करके बोलते हैं कि आपकी बेटी ने कुछ गलत काम किया है और पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही है। और उनको मालूम था कि बेटी जो है वो बाहर पढ़ रही है, मतलब जो डेटा उनके पास पहले से था। तो इस डेटा को यूज करते हुए उन लोगों ने उसकी मम्मी को फोन करके और उससे पैसे मांगे। बाय चांस उसकी मम्मी इतनी घबरा गई कि उनको लगा कि बेटी की आवाज आ रही है, सच है मतलब बिल्कुल। तो उन्होंने क्रॉस इंक्वायरी नहीं करी और सीधे उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, जो किडनैपर जो भी मतलब स्कैमर्स थे जो भी थे। तो उन लोगों ने उन्होंने उसको पैसे ट्रांसफर कर दिए। जब 15-20 मिनट बाद उनको रियलाइज होता है कि यार मैं कुछ गलत कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग लगातार फोन पे बने हुए थे, स्क्रीनशॉट्स मांग रहे थे और जितना पैसा है उतना दे दो, जितना पैसा है तो भाई पुलिस तुम्हें कार्यवाही करेगी, इस तरह की बातें वो लोग कर रहे थे। तो फिर फाइनली जब थोड़ा सा उनको रियलाइज हो, वो अपने सेंसेस में लौटी, उनको लगा कि नहीं मैंने कुछ गलत किया है, तो उन्होंने तुरंत अपने XYZ को बोल के और पता करवाया अपनी बेटी के बारे में। तो उनकी बेटी एकदम फाइन थी, वो घर में अपने रूम में रह के पढ़ाई कर रही थी और इन लोगों ने उसकी फोटो फेसबुक वगैरह कहीं से निकाली, उसकी आवाज उन्होंने कहीं से जहां से भी उन्होंने कभी फोन किया होगा या जैसे भी उसके पहचान वाले लोग होंगे ना, तो जी तो इस तरह से आजकल ये नया फ्रॉड आया है सामने। कल ही मेरे सामने ये वीडियो आया था, तो शायद जयवीर सर उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि सर ये हो सकता है कि दिस कैन बी द नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, रिलेटेड टू AI फॉर बैंक्स एंड कस्टमर्स।
तो मैडम ये तो ऐसा है ना कि आप देखिए यहाँ पर ह्यूमन इंटेलिजेंस ज्यादा काम आया ना, अगर उनकी मम्मी ने बात करी और समझी तो ये चीज तो अपने को रखनी पड़ेगी थोड़ा सा, तो अपने को अपना माइंड भी ओपन रखना पड़ेगा। फ्रॉड डिटेक्शन में सिस्टम काम कर सकता है, लेकिन लोग क्या, वही मैंने बताया ना, यूज करते हैं वैसा। जैसे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एक बहुत अच्छा टूल है एआई का जिसका यूज किया गया, इमेज सेगमेंटेशन बहुत अच्छा टूल है जिसका यूज किया गया। ऐसे यूज करके लोग उसको गलत कर सकते हैं, बट वी हैव टू बी यूज आवर ओन इंटेलिजेंस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। बिल्कुल। और दूसरी चीज वो जो पूछ रहे हैं, मुझे लगता है शायद वो ये पूछ रहे हैं कि ऑटोनॉमस कॉलेज एंड प्राइवेट कंपनीज, एआई कंपनीज मिलकर कुछ कर तो नहीं लेंगे क्या? तो सर मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, एआई इज सो वास्ट एंड लार्ज कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो ऑटोनॉमस कॉलेज ही क्यों, कोई भी कॉलेज मिलके, कोई भी व्यक्ति मिलके किसी भी व्यक्ति से सर्विसेज लेके और कुछ भी कर सकता है, क्योंकि एआई तो इतना व्यापक रूप में फैल चुका है कि मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई इसको बाकी बचा है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। और क्या कर सकता है ये संभावना है तो अपने दिमाग पर डिपेंड करती है कि हमारा दिमाग एथिकल है कि अनएथिकल है। तो जो भी हम चाहेंगे वैसा हम कर पाएंगे, क्योंकि एआई तो सब कुछ करने में सक्षम है, जैसा मुझे लगता है। जी 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 सरिता मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी समाधान है कि जागरूक रहने की जरूरत है सर। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी हाँ जी सर, देखिए ऐसा होता है कि देखिए ये जो सिस्टम है या जो ये एआई सिस्टम है, ये अपने आप में एक इतना बड़ा एक्सपर्ट सिस्टम भी बन सकता है। बस होता कुछ नहीं है, बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारे कोड हम एक साथ रन करते हैं। तो आप देखिए, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप अमेजन देखिए, अमेजन एक कंपनी है लेकिन कहीं दिखती है क्या? वो कंपनी पूरी ऑनलाइन चल रही है, लेकिन सोचिए कितना बड़ा व्यापार कर रही है, वो कितना बड़ा बिजनेस कर रही है। आप ये सब कैसे करते हैं? मतलब आप खुद सोचिए कि आप इसका एक एल्गोरिथम चलता है जिसका नाम होता है एसोसिएशन रूल। एसोसिएशन रूल से सिर्फ हम कस्टमर का ये फाइंड आउट करते हैं कि कस्टमर को क्या क्या चीजें एक साथ चाहिए होती हैं। तो सिर्फ कंपनी इस रूल के हिसाब से और इस अकेले एक एल्गोरिथम के हिसाब से कस्टमर का बिहेवियर जान पाती है, और जिसको हम कस्टमर बिहेवियर मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह सब कहते हैं। हम ये इसी को देखते हुए जो फ्रॉडर्स होते हैं ना, जो फ्रॉड करते हैं या जो आपको पैसे के लिए बोलते हैं, वो भी आपका बिहेवियर देखते हैं कि आप किन किन पैटर्न पे काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज के दिन वेबसाइट खोली तो आपने किस किस चीज को क्लिक किया, आप देखिए जिसको क्लिक करते हैं उन्हीं का रिकमेंडेशन बार बार आने लग जाता है आपको। अगर आपने कोई हेल्थ की चीज एक बार सर्च करी है तो बार बार आपको आपके वेबसाइट्स पे या आपके फेसबुक पे या आपके यूट्यूब में आपको वही वही वीडियोस बार बार दिखाई देंगे, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं, जो बड़े बड़े सोशल मीडिया में जो ये अलग अलग चैनल्स होते हैं, ये सिर्फ इनका मेन काम ही ऐसे सिस्टम्स रखना, ये सारे काम जो होते हैं ना वो सिस्टम्स करते हैं। उनका काम ही होता है कि आपके सिर्फ बिहेवियर को के पैटर्न्स को फाइंड करना, और जहां जहां ये पैटर्न मिलता चला जाता है वहां वहां हम कस्टमर के बिहेवियर को पता कर लेते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो ओके, हमको ये चीज इस तरीके से इस जो भी बंदा है उसको हमें इस तरीके से बोलना है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा जो होगा हमें पैसा देगा और हमारे साथ काम करेगा। बस यही डर है कि जैसे सर ने बोला कि जागरूक होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टेक्नोलॉजी के एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। तो आज एथिकल एआई के लिए ही लोग इतना जा रहे हैं, जिससे कि जो भी काम हो वो एथिकली हो, ना कि सोसाइटी को कुछ नुकसान देने के लिए हो। सर मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू।
ला सकते हैं। थैंक यू सर। सर जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।